জামুগুৰিহাটৰ ঢলাইবিল বৰমতা গাঁৱত চলিছে কাঠৰ আচবাব তৈয়াৰ কৰা মহিলাৰ এক প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা। গ্ৰাম্য বিকাশ যোজনাৰ অধীনত প্ৰথম পৰ্যায়ত গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ 20 গৰাকী মহিলাক পেলনীয়া কাঠৰ টুকুৰাৰ দ্বাৰা ৰন্ধনশালত প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন সা-সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে সুদৰ্শ প্ৰশিক্ষক তথা কুটিৰ শিল্প সাধক সুদীপ্ত ঘোষে। বৰ্তমান ঢলাইবিল বৰমতা গাঁৱৰ এইসকল মহিলাই পেলনীয়া কাঠৰ টুকুৰাসমূহ সংগ্ৰহ কৰি নিজ হাতে শোধিত কাঠৰ বাচন, চৰিয়া, বেলনা, হেতা, চামুচকে ধৰি বিভিন্ন বাচন বৰ্তনৰ লগতে কাঠৰ পুতলাসমূহ তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰশিক্ষকগৰাকীৰ মতে মহিলা সবলীকৰণ তথা গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ মহিলাসকলক স্বনিৰ্ভৰশীল কৰি গঢ়ি তোলাৰ বাবে এই 20 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালাৰ নেতৃস্থানীয় উদ্যমী মহিলা দেমতা মুলুৱাই জানিবলৈ দিয়া মতে এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত মহিলাসকল স্বনিৰ্ভৰশীল হৈ আন মহিলাসকলৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিব। সমাজখনৰ একোগৰাকী সবল নাৰী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰি পৰিয়াল ভৰণ পোষণ পথ সুগম কৰি তুলিব পাৰিব। নেত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয়, পোনপ্ৰথমবাৰ বাবে শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটৰ ঢলাইবিল বৰমতা গাঁৱত এই প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে যদিও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্যান্য গাঁওসমূহতো এনেধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। অঞ্চলটোৰ ৰাইজে মহিলাসকলৰ এনে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপৰ আদৰণি জনাইছে। हम इसका KVIC का डिज़ाइनर हूँ और मेरे साथ में मेरा एक सहयोगी भी है और वो भी आया है। हम दोनों मिलके 20 महिला को हम लोग ट्रेनिंग दे रहा हूँ इसको स्वनिर्भर करने के लिए। इसका कुछ रोजगार जैसे फ्यूचर में इनका कुछ रोजगार मिले। ये लोग जो काम कर रहे हैं ज़्यादा तो ये लोग का कोई काम उतना सभी हाउसवाइफ ही है और इधर में इन लोग का सीजन वाइज जो चाय पत्ता का उठाने का काम होता है वो काफ़ी कम टाइम के लिए 3-4 महीने के लिए ये लोग काम करते हैं, बाकी साल ये लोग घर में ही रहता है। तो सरकार से जो ट्रेनिंग हो रहा है इसमें ये लोग का क्या होगा ना कि रोजगार मिलेगा और ये जो वेस्ट वुड जिसका ट्रेनिंग चल रहा है ये जलाने का लकड़ी हिसाब से ये लोग काफ़ी व्यवहार होता है। तो ये खराब लकड़ी को कैसे हम लोग एक आकार दे सकते हो, इसमें यूटिलिटी प्रोडक्ट, इसमें शोपीस, इसमें टॉय कैसे बना सकता है इसमें से, और इसका मार्केट का क्या वैल्यू है, इसको कैसे सेल कर सकता है। तो इसका बारे में हम लोग कुछ इन लोग का नॉलेज दे रहा हूँ और उसका ही सिखा रहा हूँ जो कैसे ये तुम लोग कर सकते हो। ये 20 दिन का ट्रेनिंग है। हम आप लोग का थ्रू में सरकार का पास भी ये प्रयास करूँगा कम से कम और भी इस टाइप का ट्रेनिंग और भी होना चाहिए। कम से कम 3 महीने का ट्रेनिंग में क्या होता है इन लोग और भी स्किलफुल होगा। बट कम टाइम में जितना आप तो देखा ही है कितना अच्छा प्रोडक्ट बना है, प्लेट वगैरह जो बना है इसका काफ़ी मार्केट वैल्यू भी है। जो ये लोग का मतलब लकड़ी का जो वेस्ट पार्ट है, हाँ, तो उसमें से इतना सुंदर प्रोडक्ट बनाया है। और इनका जो धुलाईबिल का जो इतना सारा मेरा आर्टिजन है तो इतना एक्टिव है, तो हम बहुत कम जगह में इतना एक्टिव आर्टिजन देखा हूँ। काफ़ी हम 14 साल से प्रोजेक्ट का विभिन्न अलग DCH, KVIC और भी संस्था 2-3 संस्था स्किल इंडिया का भी ट्रेनिंग देता हूँ ऑल इंडिया में। मेरा नाम सुदीप्त घोष है, हम कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू। जो काफ़ी तरह इधर का हम जो सर्वे तरफ में हम तो काफ़ी दिन इधर में 15 डेज मेरा हो गया, इधर में रह रहा हूँ गाँव में। काफ़ी लोग का रोजगार दूसरा घर में या बाहर में जाके काम करने के लिए लोग हाँ ज़्यादा प्रभावित है। तो इन लोग घर में रह के कैसे उनका खुद का जो हाथ का जो कला है इसको कैसे विकसित कर सकता है, यही हम इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ और काफ़ी जितना दिन रहूँगा करते रहूँगा ये। और इनको उसी हिसाब से मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ जो तुम लोग इसके में कैसे ये जो काम है कितना गुरुत्वपूर्ण है और अर्बन एरिया के लिए तुम्हारा काम कितना वैल्यूएबल है। तो यही हम उन लोग का बोलने के लिए। हाँ जी, सोनितपुर में फर्स्ट टाइम। हाँ, सोनितपुर में हम लोग का KVIC का ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम हो रहा है। पहले मेरा तो नॉलेज में नहीं है, जो पहले वुड कार्विंग का ऐसा ट्रेनिंग हुआ है जो वेस्ट वुड का खराब लकड़ी का जो उसमें का। इसके बाद कहाँ देना चाहेंगे?
इसका बाद मेरा अयोध्या में है, यूपी अयोध्या में मेरे को जाना है। उधर में भी 27 से उधर में मेरा एक ट्रेनिंग है। ঠিক ধন্যবাদ মালোৱা হয় মোৰ গাঁও বৰমতা ঢলাইবিলৰ তে আমি ইয়াত মানে গ্রামের দিকে গ্ৰামীণ উদ্যোগৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছো গ্ৰামীণ উদ্যোগৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আমি মানে পেলনীয়া কাঠ টুকুৰা দি মানে আমি বিভিন্ন বস্তুবিলাক বনাব পাৰিছো প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা আৰু আমি এই প্ৰশিক্ষণত বহুতখিনি শিকিবলৈ পালো আৰু 20 গৰাকী মহিলাই বিভিন্ন নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে নিজৰ ডিজাইন বনাইছে কিছুমানে ট্ৰে বনাইছে কিছুমানে মাছ বনাইছে কিছুমানে মাস্কৰ বাটি অনেক বস্তু মানে বনোৱা হৈছে এটোৰ কাৰণে আমি খুবেই সুখী হৈছো এইখন মানে গ্ৰামীণ উদ্যোগৰ ফালৰ পৰা আমি যেটো প্ৰশিক্ষণ পাইছো তাৰ বাবে আমি গ্ৰামীণ উদ্যোগক আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছো তাৰ বাবে আমি 20 গৰাকী আছো আটাইকেইটা আমি মহিলাই হয় ৰাতিপুৱা আমি 10টা বজাৰ পৰা 3টা 4টা লৈকে আমি কাম কৰো ইয়াত ঘৰৰ গোটেইখিনি কাম আজৰি হৈ আমি স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীক পঠাই তাৰ পাছত আমি এইখিনি কামলৈ প্ৰশিক্ষণলৈ আহো এই প্ৰশিক্ষণত আমাৰ বেছিভাগে পেলনীয়া কাঠবোৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে হয় মানে ৱেষ্ট হোৱা কাঠ টুকুৰাবিলাক যেটো নেকি আমাৰ দৰকাৰ নহয় এইবিলাক কাটক মানে আমি মানে গ্ৰামীণ উদ্যোগৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰিছে আমাক কাঠ টুকুৰাবিলাক আমাৰ প্ৰশিক্ষণ আজি 15 দিন হৈ গ'ল আৰু 5 দিন বাকি আছে 5 দিনৰ মানে আমাৰ 24 তাৰিখে শেষ হ'ব আমি 5 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো আপোনালোক স্বাৱলম্বিতা হ'ব পাৰিব মানে আমাৰ মনোবল যদি ইচ্ছা আছে আমি নিশ্চয় স্বাৱলম্বী হ'ম বুলি আশা কৰিছো আৰু স্বাৱলম্বী হ'ম বুলি মানে আমাৰ যিমানখিনি মহিলা গৰাকী আছো গোটেইকেইটাই মানে এটা আমি মানে এই উদ্যোগৰ দ্বাৰাতে আমি মানে আমাৰ বৰমতা অঞ্চলটো ডেভেলপ কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু যিবিলাক মহিলা বাহিৰত শিকিব বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আমি গ্ৰামীণ উদ্যোগক আমি মানে অৱগত কৰিম যে আকৌ আমাৰ ঢলাইবিল অঞ্চলটো আমাক প্ৰশিক্ষণ লাগে তেওঁলোকক আমি মানে অৱগত কৰি কিনে আমি তেওঁলোকৰ পৰা আকৌ বিভিন্ন অনেক মানে ঠাইবিলাকৰ পৰা যিখিনি আমাক শিকিব লাগা সেইখিনি আমি মানে সহায় বিচাৰি তেওঁলোকক অৱগত কৰিম বুলি ভাবিছো ধন্যবাদ জামুগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ মেডৰ ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি